Welcome once again. We'll start with a food for thought with this quotation which says that you can please some of the people most of the time and most of the people some of the time. But can you please all the people all the time? Well, if you're talking about pleasing customers, then yes, companies can definitely please all their customers all the time, provided they strictly adhere to the CRM cycle and its three phases, which we are going to discuss in this session. So, talking about the three phases of the CRM cycle as they appear on your screen, phase number one is assessment phase, then comes planning phase, and the last is execution phase. These are the three phases of a CRM cycle. We're going to study each one of them in brief in this session. Talking about the phase number one, that is assessment phase. So, assessment phase. This phase, it basically develops a model of the behavior of the target customer, meaning that the purpose over here is to know how our target customer will behave in a given circumstances in the future. और इनको पता करने के लिए इसका behavior क्या होगा उसको पता करने के लिए there are a combination of various data which can be used and data analytics apply करा जाता है उस data के ऊपर. in-house data भी हो सकता है या फिर external data जैसे कि demographics या psychographic of the customer. तो इन सबको assess करके companies can easily figure out how will their target customer behave in a certain circumstances. इसको पता करने के लिए there are n number of questions which needed to be answered and the company must know the answer to these questions. One is आखिर कंपनी से कस्टमर अल्टीमेटली है कौन, उसके कस्टमर का डेमोग्राफिक्स और लाइफस्टाइल किस तरीके का है, कहां पर वो लोकेटेड हैं, व्हाट आर दे वर्थ, दैट इज उनकी लाइफ टाइम वैल्यू पोटेंशियल कितना है. ये क्वेश्चंस पता करना कंपनीज के लिए बहुत जरूरी है while they are going through this assessment phase. Not only these questions but certain others like what and how do they buy, कस्टमर्स क्या खरीदते हैं, किस तरीके से खरीदते हैं, किस मेथड से, परचेज पैटर्न है क्या, उनकी फ्रीक्वेंसी क्या है परचेज की, क्या कोई प्रॉफिटेबिलिटी का मॉडल है उनके साथ या कोई रिस्क है उनके साथ डील करने में कंपनीज को, या फिर किस तरीके से उन तक पहुंचा जाए, दैट इज कौन सा चैनल ऑफ कम्युनिकेशन उनको बेस्ट सूट करता है, और वो देखा जाएगा. पास्ट प्रमोशंस हमने कौन कौन से चैनल पे करे हैं उसके बेसिस पर वी कैन इजीली फिगर आउट कि कौन सा चैनल ऑफ कम्युनिकेशन कस्टमर प्रेफर करता है कि उस चैनल से उसको कांटेक्ट करा जाए. So once we have got answer to all these questions, assessment is done. Then we can move on to the phase 2, that is planning phase. अभी यहाँ पर क्या होगा, जो इन्फॉर्मेशन हमने स्टेप नंबर 1 में गेन करी उसका यहाँ पर यूज करेंगे कहाँ पर, हम प्लानिंग फेज के अंदर. तो प्लानिंग फेज के अंदर ऑर्गेनाइजेशंस बेसिकली दो काम करते हैं. वो ये कि कौन सा वो बेस्ट तरीका है जिससे कस्टमर को अप्रोच करा जाए, कौन सा कस्टमर जो हमने अभी फर्स्ट स्टेप में डिफाइन करा था उसको किस तरीके से अप्रोच करा जाए, द बेस्ट वे टू गेट थ्रू टू द कस्टमर. एक तो ये काम यहाँ पर करना है, उसका प्लानिंग करना है, और दूसरा बेस्ड अपॉन दिस इंफॉर्मेशन डिजाइनिंग अ मार्केटिंग कैंपेन एंड स्ट्रेटजीज अकॉर्डिंगली दैट विल बेस्ट सूट द टारगेट कस्टमर. एंड द थर्ड फेज इज, थर्ड एंड फाइनल वन इज एग्जीक्यूशन फेज. फेज नंबर 3 जो है इस पूरे प्रोसेस का. Here in this execution phase basically the focus is कि जो भी प्लान बनाया गया right उस ऑर्गेनाइजेशन ने, all that is put to work and the purpose is to make it work using all the customer touch points which are available. Customer touch points के बारे में एक dedicated video है which I have already uploaded in the past. I'll just share the link of that video over here. तो आपको अब समझ में आ जाएगा कि एक कंपनी जो अपने टच पॉइंट्स बनाती है, उस वीडियो को देख लीजिएगा टच पॉइंट्स होते क्या हैं. तो टच पॉइंट्स को कैसे कस्टमाइज करना है, वो कस्टमाइजेशन इन्हीं 3 फेजेस के थ्रू करा जाएगा. ये 3 फेज को क्रॉस करते हुए कंपनीज फाइनल ये बात पता चल जाएगी कि अपने कस्टमर टच पॉइंट्स को किस तरीके से अपग्रेड करें, मॉडिफाई करें, मैनिपुलेट करें, सो दैट दे हैव द मैक्सिमम इम्पैक्ट. With this, I wind up this short session. कंटिन्यू करते रहेंगे नेक्स्ट सेशंस के साथ. स्टे ट्यून्ड. थैंक यू सो मच.